particle physics is around, I think, GeVs when you are working in at the level of nucleon or deeper at the level of quarks. So if you want to go beyond, then it's high energy particle physics. So I was just explaining because it's a very new department here. Many people do not know why we are always talking about that is high energy physics. So that high energy physics is basically particle physics with high energy. So we have collaborations. Recently, IOP signed MOU with National Center for Physics Islamabad. IOP Physics Group is strongly collaborative of NCP, especially Department of Experimental High Physics at NCP Islamabad. High Physics Group is also promoting working with HEP, Center of High Physics at Punjab University, Lahore. And in future, High Energy Physics is working to have collaboration with CMS experiment at CERN, Switzerland. So other international collaborations like in China. So if our group or discipline or our department is able to execute these collaborations, especially first on the collaboration at CERN, so that will be a major breakthrough for high energy. IOP, when it happened, let's say, depend on efforts, and there are many things behind this to make it happen. So here we have involved money, we have involved many things. So high officials, when we satisfy our confidence like the vice chancellor office, then we will be able to proceed with this collaboration. So, but we are in progress with the collaboration with the vice chancellor office to execute. I hope that it will be very soon. We will hear a collaboration with SARS. Also, we are working for national collaboration like Penn State. We have got some secretary at Pakistan Atomic Commission. So we are also in touch with them to be in collaboration with them, and also exploring other high-level physics or particle physics where we can collaborate nationally to increase our ability, to increase the opportunity for our students working here at the Institute of Physics, Islamic University, Lahore. So what I said that I will be talking in German. So recent activities. So our discipline, our group has made recently in this year as two scientific activities during 22. First meeting in March 22 and second meeting in June 22. Same year. That is the first meeting where since we were not 100% physical, that was like hybrid mode. We were physical and one speaker was at Zoom. Here we will also in a little bit hybrid mode. So we were there. Two speakers were here at IUP and three speakers joined us at their Zoom. So we made successful this two activities during 2022. So today activity. I'm sorry. Today activity is the part of the seminar series that the high energy physics group has launched for semester 22, fall 22. So that's today's seminar, the first seminar of that activity. So can we keep with us for more exciting seminars and webinars during this semester? Or maybe it will be continued to winter 2023 as well. Next. So here is the main brochure or main chart. So we have the potential speakers. We have the potential speakers
all around the globe. So we started from our respective of the directors, Professor Dr. Said and Abdullah, to start with the radiation physics, and then we have Professor Dr. Mufidul Rahman Qurani, ex-director, National Center for Physics, and in coming months we have this seminar in the first or maybe first 10 days of November, if it's possible. So Dr. Zafar Mudi is Chairman, Associate Professor, Department of Physics, Gazi University. And then we have a very good speaker from Tehran University, Dr. Mansoor Rahman. He's a professor at the Department of Physics. And then again, Dr. Faisal Rahman is a very, very influential and good speaker, particle physics especially. And so we will be very happy that he agreed to come here at Islamic University Hall for end of November or December. So, and then here I will just mention again a very good and very accepted speaker from Kingdom of Saudi Arabia. He is a data scientist. He used artificial intelligence, machine algorithms, and many more. So we will be very happy that we will also be going to organize this webinar as well. And then Dr. Wajid Khan is my colleague and friend from National Center for Physics. He is a data analyst. He is a very good, exceptionally good, I think. And then we have Dr. Mohammed Ahmed. He was working at the National Center for Physics. Currently, he is also at Saudi Arabia. He also had to give a webinar at some point. So, next slide. Some glimpses that we made previously. So here are some our picks that we arranged. Second, physics. Next. We also have weekly activities, regular weekly activities where we see weekly reports, future planning about our seminars, about all our future projects, whether it's a seminar, webinar, anything that we are planning, we do we do in our weekly activities. So that's why I found it good with that. So I am here just to conclude, as I said, that I will be talking in general about the initiative, about this particular department that we have at the high energy physics department. So firstly, it's a fastly growing department of particle physics or high energy physics at the Institute of Physics at IIT Bombay. We are working on various extraordinary projects. So in projects, we have, first of all, we have this high energy physics data analysis. Then we are one of our faculty members working on physics beyond standard model and string cosmologies and quantum field theories. So our group is also working on top of physics. It's working on in both ways. It's working on data analysis. So we cannot, since we are not ability right now to access the data from CMS or any other experiment from Sun. So we will use CMS open data. They have some open data access. So we are using that CMS open data access, and we are also doing phenomenology. These phenomenologies are being done with various generators like Radgraph, currently accelerator, project we have requirement for other generators, so we can also use other generators as well. So then we do in this phenomenology, we do vector effects using delta simulation, and also we can do Radgraph analysis. At the end, we can see our results in analysis as well. We have adopted analysis as well. So we are also working, one of our colleagues, Dr. Mohammed is working also on dark matter. We are also working on dark physics. We are also working on dark matter surface phenomenology. And then we are also working on GR4 detector simulations. And as I said, few of the students, my students are also working on solar cell simulation. Again, it's a simulation. We are using
steps by the software that is from some university in UK. So we have adopted that software and we got training from one of my friends, Dr. Juan Person, at Guitar University. Now one of my students when got trained, he can produce results with our adopted years. And then also, it's regularly arranging conferences and seminars and study tours and lectures in future plans. We have. So at the end, I would like to acknowledge it's all due to Professor Dr. Saidam Abdullah, Dean of Faculty of Physical and Mathematical Sciences. So it's all that we are in the Institute of Physics with its 11 students, and one of them is particle physics. So we are, that is all due to Professor Dr. Saidam and initiatives and the meditation. So all we acknowledge to Professor Saidam and then Institute of Physics and in general, of course, it's Islamic University of Harvard, who provided us the platform to do all these activities, all these research and everything. That's Islamic University of Harvard. Thank you very much. So it's open for question now. So in general, I had a discussion with the people that if you have the hall, then it should be flexible microphone and things should be flexible and slides should be changed with this pointer. So then you can. I was wholly looking at the slides. I was not interacting with the students because due to this lack of this. Okay, so welcome. We are in, okay. Sir are in, Professor Dr. Saidam Al-Budasa, we will welcome our worthy director. So meanwhile, we can take questions from the audience or from the Zoom. Anyone? Sir. Any questions? No? Okay. Big Bang यहाँ से start होता है वो थोड़ा सा clear होता है यहाँ पर आपने space और time और कहा कि space and time यहाँ से start होता है yes if I can go to the slides. This one I was saying that everything since our universe started, where it is? Where is projector? Why? Okay, I was just saying that our universe started at one point. That was a big explosion, which we call a Big Bang. But we consider that explosion was due to very dense energy. So after that point, before that point, we do not know anything because everything started from that point. So after when it was explosion, then everything starts making. Matter started from that point. So we want to study how the matter was formed, how the atoms, molecules, before the atoms and molecules, how things got developed. So currently we do not know because they formed at that point. So we cannot at that point, we cannot go back in time. So that condition will be created. People usually create that condition in accelerators. Please welcome to our worthy director, Professor Dr. Saidam Al-Budasa. Sir, please. Sir, please have a seat. And Dr. Faisal Iqbal and all of our colleagues. Thank you very much, sir, for joining
and gracing our activities. So I was saying, what is issue? Unique issues. So we are facing some projector issue. It's not projecting our slides, and you also need to cover this. Someone is doing something from Zoom. Do not allow anyone to. Any other question? एक्चुअली सर इस ग्रुप का मकसद ये है कि मतलब इंजीनियरिंग से लेकर टेंथ और हमारे स्टडी सही तक की जर्नी उस जर्नी को स्टडी करना मतलब हाई एनर्जी मतलब कैसे पार्टिकल्स जो हैं वो कंबाइन हुए क्या वो फोर्सेस थी और क्या वो कंडीशंस थी Yes. Yes. You know that since if you are working with low energies, if you are with very low energies, so then you cannot observe. Basically, we are with higher cameras, like very high resolution and with many pixels. So अगर आपका कैमरा अच्छा हो like that, तो आपके फेस के ऊपर एक छोटा सा डिंपल भी हो, तो वो भी आप देख सकते हैं, वो निशान भी आ जाता है. तो अगर आपने वेरी डीप, अगर आपने क्वार्क्स लेवल से भी नीचे स्ट्रिंग्स लेवल पे जाना है या उस पॉइंट पे अगर आपने जाना है, so you need a big cameras. These big cameras are like big accelerators. So those accelerators are with very high energies. So we need that energies. If we do not have any question, okay. Sir, because of today's seminar, I can know about dark. Can you say anything about dark matter? What is dark matter? So as I can say that from the name, it's a dark. Currently, we do not know in general. We do not know any candidate of the dark matter like we know the candidates of our simple matter. We have some we have some glimpses from the gravitational boost, gravitational pull, from where we said that there is some matter which is very heavy and making 23% of the universe. So we have some gravitational effects from that matter, but we cannot say, I cannot say anything. What is that matter? That is dark, that is very unknown. People need to explore that. It's a very unknown question. Next. सर ऐसा है कि यूनिवर्स जो है एक्सपेंड हो रही है, इसके बारे में थोड़ा सा डार्क मैटर से रिलेटेड है, जैसे कि आपने कहा कि yes अट्रैक्टिव नहीं है बल्कि ये ऐसे फोर्सेस होंगे. Universe, what we know that universe is expanding at all the time. It's going away from each other. So it's due to, maybe I am not expert in that field. I cannot go deeply with this, okay, why the other phenomena, but it's expanding. If मेरा फर्स्ट पार्ट ये है कि आपने मेंशन किया कि आवर वर्ल्ड इज स्टार्टेड फ्रॉम बिग बैंग. सो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिसर्च जो मतलब मैं आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट, जो कह रहा था कि एक्चुअली वर्ल्ड इज नॉट ड्यू टू द बिग बैंग, इससे पहले की यूनिवर्स एग्जिस्ट करती. तो क्या हम अभी भी मतलब बिलीव करें कि बिग बैंग वाज द इनिशियल थिंग ऑफ दिस यूनिवर्स? और मेरा सेकंड पार्ट ये है कि आपने मेंशन किया कि वी आर कोलैबोरेटिंग, I mean HEP is the platform which is collaborating in different universities in Pakistan as well as in all over the world. So is this is the platform for a guy who is interested in working research in MPhil or PhD?
So you provide guidelines or opportunities regarding that. Yes. So your first question, though, first of all, I can say there are many, in general, there are many theories. People are working on multi-universal concept as well. So, but still it's not a verified thing. So what thing that mostly people believe that it started from the Big Bang currently, but we are unaware. So maybe there will be something else before, or there will be many other phenomena, maybe, who knows? But we know currently what we adopted, we started from the Big Bang. So it can be, I cannot say that there cannot be, but it can be things that started. Maybe there are, but there is no evidence, there are no things like that on which we can trust there was. So there should be some clue. If there was other points as well, or there are something before Big Bang, so there should be some clue. But currently we do not have any clue for that. So as a for second part of, okay, in general, our institute have collaboration with many institutes, many universities, or many research centers. So all our students can attain that facilities. Anyone wants to go there, anyone wants to do research, so they are always welcome. They will be guided, they will be communicated, so you will be guided, and then we can make sure that you go there and do good research. So we can talk to them, we can be helpful. Okay, if we do not have good question, again, another question, so I can close my talk here. Is there any question online? Full stop. We're getting late, I think. We should proceed to our next talk. Yes. We can discuss, send me question with my WhatsApp or something, we can discuss that. But currently we're getting late, so Thank you, sir. I would like to thank Dr. Shoaib Lodge for opening our eyes to this potential branch of physics. Now, I would like to introduce Professor Dr. our guest speaker, Professor Dr. Said Bustar, who is Director of Institute of Physics and Dean Mathematical and Physical Sciences. He completed his postdoctorate from University College London in 2014. His field of interest is medical physics. He progressed the Department of Physics to the Institute of Physics due to his legitimate relevance. His exceptional and unfaltering efforts on the behalf of Institute of Physics will be remembered forever. We are grateful, sir. We truly recognize his efforts and generosity with his time. I request the Honorable Professor Dr. Said Ahmed Bustar to explore with us today's subject, radiation, radiation therapy, and linear accelerators. Please welcome our honorable guest with a loud round of applause. Who was supposed to be next speaker?
presentation very. Actually presentation आपके भी आई है तो उसमें आपके पास लिखा हुआ था कि Thank you very much and good morning to all of you. Congratulations to Dr. Shoaib Saab for initiating such a productive kind of series of the seminars and to initiate something from the platform of the research group HEP, and that is something which can be a source of inspiration for other groups as well of the faculty. And I believe all other groups, the heads of all other groups will also follow the same, and they will also start to arrange such kind of the seminars, because that is the real objective of the universities, and that is the real objective of the institutes around the world, in the universities, in the higher education sector, that we people will be sharing the knowledge. We should be discussing the various kind of the contemporary challenges, and with the collective wisdom, people can solve various problems around. So that is really a wonderful step, and I must appreciate Dr. Saab, you and your team, all the team involved in this activity. They all deserve a lot of appreciation. So starting it from a very smaller kind of the platform in the committee room of the institute, and now extending it to this hall. Hopefully, inshallah, we will be extending it more, and someday we'll be in the main auditorium of the university, and we will also be connected with the other universities, not only in Pakistan, but also around the globe. So that's a series of the seminar from the platform of the high energy physics. Though we are not directly linked with this group, but there are some common, definitely common areas, common attributes in physics, especially when we talk about medical physics. We do use the linear accelerators, and we do use high energy radiation and radiation beams, so that are being utilized in the medicine field, in the medical field. So this is the reason we have linked it, and on the demand of Dr. Shoaib, I'm also the part of the speaker, though I was supposed to be only in the part in the closing ceremony, but we will be collectively doing the closing as well as this last session, I guess. The last, there was another speaker, Dr. Gul, I have seen in the list, but that is not around. Okay, so for the common audience, because we have a group of this diverse group of the audience from the BS students and then the MPhil students, PhD, and the faculty member of the Institute of Physics, and some people are online joining this session. So a little background is that we all are familiar with the cancer. Is a disease that's a very life-threatening kind of the disease, and we all are familiar with that disease. That is something which is initiated with the uncontrolled growth or uncontrolled mechanism in the basic cells, in the DNAs, in the human, and that can happen in anybody, in any age, at any site of the body. The causes are still unknown, but the treatment has good outcomes. This life-threatening disease is treated with the 3 different options. You are familiar with the names of the chemotherapy, which is the treatment of this disease using the drugs, medicines. Though the medicines being used in this chemotherapy for a longer time, they were supposed to stop the further extension in the tumor. But if we add the component of the aggression in that they also had a lot of side effects, and they have very severe kind of the side effects because the immunity of a body is compromised in those sort of medicines. The second option is the surgery, which is definitely the removal of that unwanted part from the human body. But sometimes the surgery is quite tough. If the tumor in the body is very closely attached with some organ at risk, like with the lungs, with the heart, so that too is not possible to completely remove that tumor. Because if you completely remove it, you may damage something which is definitely some important functioning element in the body. And if you leave some part of the cancer, that too will actually not be the complete objective of the treatment, and that will still, that can continue again. So the third one, which is related to the physics, is the radiation therapy. Using the radiation, using the high energy radiation,
we can kill the cancer cells, we can damage the cancer cells. And that is a type of the treatment where patient cannot feel anything during the treatment, though they have some side effects. There are side effects of the radiation therapy as well, but at least at the time of the treatment, patient has not to feel anything, any pain or any other influence of that treatment. So we will be discussing very briefly in the upcoming slides about physics of the radiation therapy, what physics is behind that. Whenever you go in a hospital, you will find a lot of medical physicists over there working over there, and they are the people knowing the concepts of the physics, knowing the concepts of the radiation therapy, knowing the knowledge of X-rays, gamma rays, different kind of the characteristics, physical parameters, physical characteristics, dosimetric characteristics, and some of the biological and chemical characteristics of the various things involved in the radiation therapy. So no doctor, no physician, no radiation oncologist can do radiation therapy without the help of the medical physicists. You always need physicists for the treatment planning, for the treatment execution, for the dosimetry, for the technical aspects of the radiation therapy, for the upgradation and the research in the radiation therapy. That too is the domain of physicists, and the medical physicists are supposed to do this sort of the activity. We have a lot of people in this hall belonging to the medical physics research group. Usman, Mustafa, Sibtain, Dr. Alia, Saima Altaf, she has been the part of Shaukat Khana Memorial Cancer Hospital. She worked over there as a medical physicist. Dr. Maria, Samman, and a lot of other students are also there, which are belonging to this group, and they are also contributing in this. To understand the basic concepts of the medical physics or the radiation therapy or the linear accelerator, we all the physicists are supposed to have the basic idea of the basic physics, like atom. What is an atom? What is the size of atom? What kind of the elements are there? What are the differences in those elements? If you see the periodic table, I'm very much interested. I love simply this table because that is a very, very unique kind of the distribution of the elements in a very organized way. All elements are presented over there. They all are different from each other. There is a very small difference, for example, in the atomic number 1, 2, 3, 4, but there is a very difference in their nature, in their properties, in their physical properties, in their chemical properties, in their density, and all other properties, because all other properties are basically based on these fundamental properties, which are the atomic number, atomic weight, and the further information. If the elements in a group, elements in a period, they have similar kind of the nature, but they are again different from each other. They are still different from each other. Though they are, like if you are in a single class, you wear a similar color of the uniform, but again, you all are different. Similar is the case with the elements over there. So they all are different. So we must be having the knowledge, all of you. You are belonging to high energy physics group, you are belonging to medical physics research group, semiconductor group, material science, wherever you are. So you must be having the information and having a greater interest in this table, in this periodic table, which is organizing the basic elements in a very, very beautiful way, very effective way, and that make it easy to understand and easy to apply these elements in the various application. And then talking about the radiation, we are also interested in the various phenomena, various physics laws regarding radioactivity, regarding decay, activity, half-life, mean life, and this sort of the things. We will be discussing some of them in the next slides. I will be quickly going to the domain of the linear accelerator or the clinical radiation generators. You are familiar, the HEP group is familiar with the linear accelerator, but the linear accelerator which we people are using, that is the medical linear accelerator. That equip us with the high energy photon beams like X-rays, and sometimes we can also have high energy machines of the gamma, having a gamma ray and high energy electron rays. So high energy actually mean we in the medical physicists believe in the mega voltage region. Whenever the radiation therapy has been started, that was started with a very low kind of the energy. We started with the Grand's ray energy, with Grand's ray therapy. That was an X-ray only having
a generating potential of 20 kV. But later, with the passage of time, the energy of the X-rays kept on increasing. So the next was the contact therapy, which was between 40 to 50 kV, and then superficial therapy from 50 to 150 kV. Ortho voltage therapy, or that was also named as the deep therapy, that was from 150 to 500 volt, and super voltage therapy. And ultimately, once we were in that mega voltage therapy region, that was a breakthrough in the medical physics, breakthrough in the treatment of the cancer, because the X-rays having in interestingly, we are using kV and MV over here, though we call it energy in the medical physics. यानी हम medical physics में हमें एक गुस्ताखी की इजाजत बाज़ाब्ता तौर पे मिली हुई है कि हम एनर्जी को kV और MV में लिखते हैं, स्पेशली जब हम एक्सरे की बात करते हैं, और इससे हम पहचानते भी हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं तो हम फौरन ही MEV लिखते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन एक्सरे यूज करते हैं तो MV यूज करते हैं। एंड दैट इज द रीजन ऑफ दैट कि वो जो एनर्जी है उसकी, चूंकि दैट इज नॉट होमोजीनियस, so rather to refer to the energy we refer to the generating potential of that X-ray. So अब हम अगर ट्रीटमेंट प्लानिंग चार्ट देख रहे होते हैं मेडिकल फिजिसिस्ट के तौर पे, जैसे ही MV पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इस पेशेंट को एक्सरे से ट्रीट किया गया, और अगर MEV लिखा हुआ है तो उसमें पता चलता है कि इसको इलेक्ट्रॉन से ट्रीट किया गया। So that is the difference. But again, that is the history of the development. यानी ये 1890 1895 से रेडिएशन थेरापी का स्टार्ट तो हुआ था, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं था। जाहिर है ये जो अब जो थर्ड वन है सुपरफिशियल थेरापी या सेकंड कांटेक्ट थेरापी, इसका मतलब है जो रेडिएशन का सोर्स था वो स्किन के साथ कांटेक्ट में था, क्योंकि अगर ज्यादा दूर रखते उसको तो उसकी रेडिएशन उस बॉडी तक या उसके अंदर पेनिट्रेशन तक आसान नहीं था उनका पहुंचना। सो जैसे ही हम मेगा वोल्टेज में आए तो अब तो हम रेडिएशन का सोर्स ह्यूमन सरफेस से तकरीबन 1 मीटर के फासले पे 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखते हैं, और फिर भी वो बॉडी के अंदर पेनिट्रेट भी कर सकते हैं और उस जगह पे जाके एनर्जी डिलीवर भी कर सकते हैं जहां पे हम डिलीवर करवाना चाहते हैं। तो एक तो जो 122 125 सालों में डेवलपमेंट हुई वो एनर्जी में हुई। जो दूसरी डेवलपमेंट हुई वो हुई कंप्यूटर इंटीग्रेशन की। जो हमारी जदीद मशीनें हैं, जो जदीद लीनियर एक्सेलरेटर है, उनके साथ हमने कंप्यूटर को इंटीग्रेट कर दिया। अब कंप्यूटर कंट्रोल्ड टेक्नोलॉजी, लीनियर एक्सेलरेटर की जो तमाम मैकेनिज्म है जो मैं आगे आपको बताऊंगा, उसमें कंप्यूटर की इंटीग्रेशन ने ट्रीटमेंट के आउटकम को मजीद बेहतर बनाया और उसकी एक्यूरेसी को मजीद बेहतर बनाया। तो ट्रीटमेंट के कुछ बेसिक चीजें हैं। जब हमारे पास ये जो पहले 2-3 आप देख रहे हैं, तो इससे भी पहले या इसको जब हम इसकी बात करते थे तो जैसे kV लिखा हुआ है तो kV समथिंग नॉर्मली वी नो दैट इज द पोटेंशियल, जनरेटिंग पोटेंशियल। इससे भी एक और हम यूनिट यूज करते थे, उसको हम HVL कहते थे, हाफ वैल्यू लेयर। हाफ वैल्यू लेयर क्या होता है कि कोई आपके पास एक ऐसा रेडिएशन है जिसकी आपको इंटेंसिटी पता है, लेकिन आप उसके रास्ते में कोई ऐसी थिकनेस रख दें जिससे उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाए, तो जितनी उसकी थिकनेस होती है उसको हम कहते हैं हाफ वैल्यू लेयर। ऐसा द थिकनेस ऑफ ए मटेरियल व्हिच कैन कॉज, इट्स नॉट शोन, ओके, सो द थिकनेस ऑफ ए मटेरियल व्हिच कैन कॉज to reduce the intensity of a beam to the 50%, to 1/2. So that thickness is known as half value layer. For example, you can see in this diagram, that is for the aluminium in millimeter. So बाज हमारे पास ऐसे बीम होते थे, हम कहते, कोई पूछता था कि इसकी एनर्जी कितनी है, हम कहते थे इसकी एनर्जी 2 मिलीमीटर एल्यूमिनियम है। अब अजीब सा जवाब मिल रहा है कि 2 मिलीमीटर एल्यूमिनियम कैसी एनर्जी है, यानी उसकी एनर्जी इतनी है कि उसको आधा करने के लिए 2 मिलीमीटर एल्यूमिनियम की शीट काफी है। बाज का हम कहते थे इसकी एनर्जी 3 मिलीमीटर कॉपर है, यानी कॉपर की शीट 3 मिलीमीटर थिकनेस वाली उसकी इंटेंसिटी को आधी कर सकती है। सो दैट रेफर टू द एनर्जी बेसिकली, क्योंकि वो थिकनेस जो उसकी एनर्जी को आधी करती है, so that was referred as half value layer. लेकिन interestingly you can see in this diagram the first HVL, the second HVL and the third HVL, they are different. उसकी वजह ये है कि जब आप एक बीम के रास्ते में कोई थिकनेस किसी एल्यूमिनियम, फॉर एग्जांपल 1 मिलीमीटर एल्यूमिनियम, जो पहला आपका ब्लू कलर में शोन है, 1 मिलीमीटर एल्यूमिनियम is enough to make it half, 50%.
अब 50% का मतलब है कि वो वाले बीम रुक गए जिन बेचारों की एनर्जी कम थी, जो ज्यादा स्ट्रांग थे, जो ज्यादा हार्ड थे, वो पास कर गए। यानी जो सुस्त रफ्तार लोग थे, जैसे आप रेस में बहुत सारे लोग हैं, वो पीछे रह जाते हैं। अब जो आपके पास बच गए, अब ये रिलेटिवली हार्डर कंपोनेंट है। अब इनका भी अगर आपने आधा परसेंट करना है तो वो 1 मिलीमीटर एल्यूमिनियम काफी नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट के लिए 2 मिलीमीटर एल्यूमिनियम। So the second half value layer is greater than the first half value layer, and the third one is even greater than the first one, the second one. So that continues. So that was the age when we were dealing the very small energy materials and small energy beams for the diagnostic and the treatment purpose. But मेगा वोल्टेज जब शुरू हुआ तो सबसे पहले मेगा वोल्टेज में जो शुरू हुआ वो कोबाल्ट 60 मशीन थी, और वो इस तरह की मशीन है, रेडियोथेरापी के लिए यूज होती है। इसके अंदर हमें 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गामा एनर्जी मिलती है। 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, MEV गामा के लिए, और इलेक्ट्रॉन के लिए MEV, अगर एक्सरे होता तो MV, वो जो अब आगे हम डिस्कस करेंगे। सो दैट वाज द फर्स्ट वन इन द मेगा वोल्टेज, और ये दुनिया में बड़ी हद तक, बड़े अरसे तक यूज होता रहा। अब भी कहीं कहीं पे यूज हो रहा है, पाकिस्तान में भी ये मौजूद है। बीनो कैंसर हॉस्पिटल वालों के पास, जब से बीनो हॉस्पिटल बना या एटॉमिक एनर्जी के जितने हॉस्पिटल बने, इनके पास ये कोबाल्ट 60 की मशीन थे। अभी रिसेंटली इन्होंने नई मशीन कोबाल्ट 60 की भी खरीदी है, जिसकी आजकल वो कमीशनिंग कर रहे हैं, एक लीनियर एक्सेलेरेटर और एक कोबाल्ट 60 relatively modernized machine, जिसके अंदर MLCs भी हैं और जदीद जो बाकी कंप्यूटर इंटीग्रेशन है वो भी मौजूद है। So Cobalt 60 was the first one in the mega voltage region that has been used, but later that was upgraded and that was replaced with the linear accelerators, जिनकी हम बात करेंगे। हम जब रेडियोथेरापी की बात करते हैं तो बेसिक फिजिक्स, मैंने कहा बेसिक एटम से, पीरियोडिक टेबल से आपको चीजें सीखने के अलावा कुछ और चीजें हैं जो हम हमारी इंफॉर्मेशन के लिए, ये चंद मटेरियल है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, कार्बन, एल्यूमिनियम, कॉपर और लेड, ये एलिमेंट्स हैं। और नीचे कुछ हमारे पास कंपाउंड कहें या जो कंपोनेंट है, फैट, मसल, वाटर, एयर और बोन, ये ह्यूमन बॉडी की चीजें हैं। इनकी 3-4 प्रॉपर्टीज हमें लाजमी पता होने चाहिए। कौन कौन सी? नंबर 1 इज द डेंसिटी। We must know what is the density of water, what is the density of fat, what is the density of oxygen, what is the density of aluminium, and then the atomic number. अगर आपके पास एलिमेंट है तो atomic number, और अगर आपके पास कंपाउंड है तो फिर हम कहते हैं effective atomic number. You can see the atomic number of hydrogen 1, and then carbon 6, oxygen 8, and so on. But the effective atomic number of fat, muscle, water, bone and air, they are also presented in this chart. तीसरी चीज जो हमें चाहिए होती है वो होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर ग्राम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर किलोग्राम। कि इस एलिमेंट में हाइड्रोजन, 1 किलो हाइड्रोजन अगर आपके पास होगा या 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। 1 ग्राम ऑक्सीजन होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। 1 किलोग्राम मसल होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। These 3 are very basic information while treating the cancer patient with the help of the radiation, high energy radiation. उसके अलावा what happened in the radiation therapy, this is a very important, one of my favorite table in the FM Khan's book. Whenever you talk about interaction of radiation with matter, so that's a very broader kind of the subject. Interaction of radiation with matter is not only a subject of the medical physics, but that is also the interest, a source of interest for every physicist. Okay, so you can see that for a smaller energy, for example, starting with the 0.01 mega electron volt, what is dominating? That is the photoelectric effect. The first component, tau, representing 95% photoelectric effect, 5% Compton effect, and no pair production. But you see, whenever the energy will increase, you start to increase the energy, the importance of the photoelectric effect will reduce, and then the Compton effect is increasing, and you can see at a certain stage, that will be the fourth one, we can see 100% Compton effect. But later the pair production start, because you know we need a certain energy, a minimum energy required to start the pair production. So once we achieve that energy, pair production will start, and then this component will start to increase, but there's no photoelectric effect and a smaller component of the Compton effect. This is the reason of all, like if we are treating a cancer patient, we must be knowing, if we are providing a high energy to that patient, what's happening inside the patient, all these processes. Compton effect is there, pair production is there, and
photoelectric effect can be there. Secondly, what will happen, like if we increase the energy, what will happen on the attenuation? कोई certain beam आपने किसी patient पे ऊपर apply करवा दिया, जब वो उसकी patient की skin पे होगा उसकी energy ज़ाहिर है ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे ही वो penetrate करना शुरू हो जाएगा human body के साथ interact करने की वजह से जो पिछला table है उसकी attenuation होगी, उसकी energy में कमी हो जाएगी. आप देख सकते हैं, we have plotted photon energy and mass photon photoelectric attenuation coefficient. In case of the water, you can see जब आप 0.01 mega electron volt energy, and you can see the energy 0.1 energy and 1 mega electron volt energy on the x-axis. Energy आप increase करते जाएंगे तो attenuation वाला component कम होता जाएगा. लेकिन एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, वाटर के लिए आपको जो लाइन है वो simply coming down, but in the case of the lead is a source of very interest in physics in radiation therapy, because we use the doors of the LEDs in a radiation room to avoid the radiation leakage and to avoid the hazards of the radiation. So lead की तमाम पैरामीटर्स, तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इसकी जो एनर्जी के साथ जो ग्राफ आप देख रहे हैं, तो there is a downfall and then a peak and then coming down and then again a peak. That is the reason because जो उसका आउटर मोस्ट शेल है, आपको पता है जितना ज्यादा शेल न्यूक्लियस से दूर हो उन इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी कम होती है. सो सबसे पहले तो उसके जो रेडिएशन टकराएगा उस लेड के आउटर इलेक्ट्रॉन को वो रिमूव करना शुरू कर देगा. जब आउटर इलेक्ट्रॉन सारे एक आखिरी शेल के रिमूव हो गए, उससे जो अंदर वाला शेल है उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है उससे ज्यादा है जो आउटर था. अब उसके इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉन निकालता गया, वो डाउन होता गया अटेन्यूएशन, लेकिन जब आप इनर में आ गए तो फिर एक दफा वो बढ़ गया. अब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए जो उसके पहले इलेक्ट्रॉन की निस्बत, फिर दूसरा, फिर ये नीचे आना शुरू हो जाएगा. ये नीचे आया, लेकिन उसके बाद जब ये दूसरा, ये वाला सेकंड लास्ट शेल भी उसका खाली हो गया, फिर थर्ड पे पहुंचा तो फिर देयर इज ए पीक. सो ये हर एलिमेंट के साथ होगा इस तरह की, ये जिस फिनोमिना आप देख रहे हैं, तो दीज फिनोमिना वर्क्स ओवर देयर टू अंडरस्टैंड. You can see for a broader range, इसी ग्राफ को ब्रॉडर रेंज के लिए भी शो किया गया, 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए वाटर और लेड के लिए. But now we go to the treatment planning. That is the most important task of a medical physicist working in a hospital. He is supposed to make a better treatment plan for the cancer patient. आप किसी कैंसर के पेशेंट को अगर रेडिएशन से ट्रीट करने जा रहे हैं, साइमा अल्ताफ will know better क्योंकि she has worked as a treatment planner in a cancer hospital, कि आप जितना ज्यादा उस पे वक्त गुजारेंगे उस ट्रीटमेंट प्लानिंग के ऊपर. ट्रीटमेंट प्लानिंग बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप फाइन आर्ट्स के बच्चों को देखते हैं कि वो अपने चार्ट पे कोई एक आर्टिस्टिक सा काम कर रहे हैं, तो उस आर्टिस्टिक काम करने में जितना ज्यादा आप देर लगाएंगे आप बेहतरीन. एक दफा आपने प्लान कर लिया, वो जो प्लान होगा, पेशेंट की जो रेडियोथेरापी होती है वो एक दिन में नहीं होती, वो 20, 25, 30 दिन तक डेली हर 2-3 मिनट के लिए उसको ट्रीट किया जाता है, फिर उसके बाद छुट्टी, अगले दिन फिर. सो उसी एक प्लानिंग की बेस पे अगर प्लानिंग आपने अच्छी बना ली तो उसकी फिर एग्जीक्यूशन और उसके असरात भी अच्छे होंगे. लेकिन अगर प्लानिंग कंप्रोमाइज्ड है तो फिर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि डिजीज कंप्लीटली क्योर्ड होगा. ट्रीटमेंट प्लानिंग में हमें कौन कौन से पैरामीटर चाहिए? 3 बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं. एक पेशेंट डेटा, एक मशीन डेटा और तीसरा कैलकुलेशन सिस्टम. पेशेंट डेटा जो होता है, हर पेशेंट का अपना डेटा होता है. डेटा किस फॉर्म में मिलता है? सीटी स्कैन की फॉर्म में, एमआर इमेज के फॉर्म में. हम इमेज के ऊपर प्लानिंग करते हैं, हमें इमेज नजर आता है, हमारे कंप्यूटर पे इमेज हमारे पास होते हैं, हमें फिर वो डॉक्टर बताते हैं कि इस इमेज में ये जो जगह है ये ट्यूमर है, और ये जो जगह है ये इसके साथ कोई और चीज है जिसको आपने रेडिएशन से बचाना है. जब वो मार्क करके देता है फिर डॉक्टर का काम खत्म, फिर फिजिसिस्ट का काम शुरू कि अब इसको रेडिएशन मैंने किस तरह से देनी है, किस एंगल से देनी है, कौन सी एनर्जी देनी है, इलेक्ट्रॉन देना है या एक्सरे देना है. जितने भी हमारे पास ऑप्शंस हैं जिनको मैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहता हूँ, कि वी हैव लॉट्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, कि वी कैन ट्रीट ए पेशेंट. जो मशीन है वो 360 डिग्री रोटेट कर सकता है. आप 0 डिग्री से उसको रेडिएशन दें, 1 से 2 से 3 से 4 से 180 से 90 से 270 से, दैट्स एन ऑप्शन, दैट्स ए डिग्री ऑफ फ्रीडम. आपके पास ऑप्शन है कि एक्सरे से ट्रीट करें, इलेक्ट्रॉन से ट्रीट करें, डिग्री ऑफ फ्रीडम.
इलेक्ट्रॉन से ट्रीट कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है 6 एनर्जीज अवेलेबल है, इनमें से कौन सी एनर्जी सिलेक्ट करूं. सो दैट्स एन ऑप्शन. ऑल द ऑप्शंस आर द डिग्रीज ऑफ द फ्रीडम फॉर ए प्लानर, जिनको वो इस्तेमाल करता रहता है और अल्टीमेटली अच्छी. लेकिन देयर आर सम कंस्ट्रेंट्स एज वेल. कंस्ट्रेंट ये है कि आप वहां पे बेबस है, कुछ नहीं कर सकते. अब जो ट्यूमर का साइज है वो आप कुछ कम नहीं कर सकते, तो उतना उतना ही मशीन आपको ओपन रखना पड़ेगा जितना ट्यूमर का साइज है. अब ट्यूमर किसी ऐसे ऑर्गन के साथ अटैच है, लंग के साथ, हार्ट के साथ, तो उसको भी आप कुछ नहीं कर सकते. सो वो आपकी कंस्ट्रेंट्स हैं. तो इन कंस्ट्रेंट्स को और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को देखते हुए आपने इन 3 चीजों को, पेशेंट डाटा जो मैंने बताया कि हर पेशेंट का अलग, लेकिन मशीन डाटा एक दफा जब आपने मशीन खरीद ली, लीनियर एक्सेलरेटर आपने खरीद लिया, तो आपने तकरीबन 5-6 महीने या 2-4 महीने, अगर आप ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उस मशीन का तमाम डाटा लेना होता है, जिसको हम कमीशनिंग कहते हैं. आप किसी वाटर फैंटम को यूज करें या किसी और मटेरियल को जो कि ह्यूमन बॉडी के करीब तरीन हो उसको यूज करें, और उसकी तो तमाम जो डाटा है, डोजीमेट्रिक डाटा जिसको कहते हैं, क्योंकि ये डाटा परमानेंटली यूज होगा हर पेशेंट के लिए. हर जो पहला पेशेंट डाटा है वो हर पेशेंट का अपना अपना. मशीन डाटा, मशीन जो आप यूज कर रहे हैं उसका लाइफ टाइम, जब तक वो मशीन काम कर रही है तो आप वही डाटा यूज करेंगे हर पेशेंट के लिए. अब इन दोनों को लिंक कौन करता है? कैलकुलेशन सिस्टम, एक प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर, अल्गोरिथम, pencil beam, collapsed cone, Monte Carlo, there are so many different kind of the options available. जिस जो आपका अब रफली अगर एक 40 करोड़ रुपए का लीनियर एक्सेलरेटर आता है तो 5 करोड़ रुपए का उसका सॉफ्टवेयर आता है जिसको टीपीएस, ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम कहते हैं. वो सॉफ्टवेयर बहुत टेक्निकल सॉफ्टवेयर है. उसको किसने बनाया? एक बहुत बड़ी टीम ने जिसमें फिजिसिस्ट थे, जिसमें कंप्यूटर के एक्सपर्ट थे, जिसमें मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट थे, जिसमें एनाटॉमी के एक्सपर्ट थे, मेडिसिन के एक्सपर्ट थे. उन तमाम ने मिल के वो सॉफ्टवेयर बनाया. उस सॉफ्टवेयर के बगैर वो मशीन किसी काम की नहीं है, जो इन तमाम चीजों को, पेशेंट डाटा को और मशीन डाटा को इकट्ठा करके हमारे ट्रीटमेंट प्लान की इफेक्टिवनेस को शो करता है कि जो प्लान आप बना रहे हैं ये प्लान कितना काम करेगा, कितनी कामयाबी से काम करेगा, वो कैलकुलेशन सिस्टम बताएगा. यानी हम तमाम पैरामीटर सेट करेंगे और उसके बाद अपने सॉफ्टवेयर को कहेंगे कि अब हमें रोज डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दो, तो वो कैलकुलेशन सिस्टम रन करता है और अल्टीमेटली आपको ग्राफिकली शो कर देगा कि किस जगह पे कितनी परसेंटेज डोज रिसीव हो सकती है. तो अगर वो इमेज हमें एक्सेप्टेबल है तो हम उसको फाइनल कर लेते हैं, अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो वी विल रीप्लान इट. ठीक है. इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, जो मैं आपसे शेयर करता हूं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोजिमेट्रिक क्वांटिटी इज द परसेंटेज डेप्थ डोज, कि किस डेप्थ में कितनी परसेंटेज ऑफ द डोज जाती है. आप एक पेशेंट है, अगर पेशेंट की थिकनेस 30 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल, तो 1 सेंटीमीटर नीचे डोज का कितना परसेंटेज पहुंचेगा, 7 सेंटीमीटर के डेप्थ में कितना परसेंटेज पहुंचेगा, 10 सेंटीमीटर डेप्थ में कितना परसेंटेज पहुंचेगा. दैट इज कैलकुलेटेड एंड दैट इज मेजर्ड एज वेल. जो मैंने मशीन डाटा की बात की, हम मशीन को रेडिएशन ऑन करते हैं, नीचे वाटर फेंटम रखते हैं और उसके अंदर चैम्बर रखते हैं, वो डोज को मेजर करेगा. उस चैम्बर को फिर डेप्थ में मूव करते हैं, हर डेप्थ के ऊपर वो डाटा को मेजर करके हमें दिखाएगा. लेकिन अल्टरनेटली आप इस फार्मूले से भी परसेंटेज डेप्थ डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं. परसेंटेज डेप्थ डोज इज ए फंक्शन ऑफ 3 पैरामीटर्स, डी, आर एंड एफ. डी इज द डेप्थ, आर इज द फील्ड साइज एंड एफ इज द सोर्स टू सरफेस डिस्टेंस, सोर्स टू स्किन डिस्टेंस. दोनों कहते हैं कि मशीन जो सोर्स है रेडिएशन का, वहां से लेकर पेशेंट के स्किन तक कितना डिस्टेंस है, जो कि नॉर्मली लीनियर एक्सेलरेटर में 100 सेंटीमीटर होता है. आपके पास मार्कर नहीं है? मैं वैसे बता दूं कि अगर आपके पास कोई भी रेडिएशन का सोर्स है, यहां से रेडिएशन जनरेट करें, तो फिर उसकी जो रेडिएशन की एनर्जी जो उस रिलीजिंग पॉइंट पे है, उसके बाद वो मुसलसल जितना दूर जाता जाएगा उसकी एनर्जी कम होती जाएगी. किस फार्मूले से? इनवर्स स्क्वायर लॉ. डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा तो उसका जो, यू कैन सी फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज द रेडिएशन सोर्स, ये आपके पास लीनियर एक्सेलरेटर का हेड है, यहां से एनर्जी रिलीज हो गई. सो अगर ये जगह यहाँ पे डिस्टेंस r है तो 1/r² इसकी
जो एनर्जी है वो कम होगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम इसके रास्ते में एक वाटर फ्रंट कर रखते हैं। अगर कोई चीज ना होती तो 1/r², लेकिन एक चीज मौजूद है, पेशेंट मौजूद है या वाटर मौजूद है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसको हम कह रहे हैं SSB, मैंने F का मतलब है SSB, सोर्स टू सरफेस डिस्टेंस, यहाँ पे F1 लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जो यहाँ मैंने चैम्बर रखा हुआ है मैं मुहैया कर रहा हूँ, तो इसको मैं कह रहा हूँ D, डेप्थ। तो ये दो अलग चीजें है, वो एयर था, ये मटेरियल है, तो वो इसको 1/r की बजाय 1/f+d², ये F डिस्टेंस है, ये D डिस्टेंस है, 1/r² हो गया। F का मतलब है SSD, D का मतलब है डेप्थ। लेकिन यहाँ पे एक मसला और होता है कि इस वाटर में या ह्यूमन बॉडी में यहाँ पे एक जगह होती है जिसको हम कहते हैं Dmax। Dmax का मतलब होता है डेप्थ ऑफ मैक्सिमम डोज। ये जो रेडिएशन है ये इसकी इंटेंसिटी में कमी बेशक हो रही है, जैसे ही यहाँ पे आके ह्यूमन बॉडी से या वाटर से टकराएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को वो इजेक्ट करवाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे तो फिर उसकी एनर्जी तो थी ही, लेकिन साथ इलेक्ट्रॉन की किनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई। यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी एनर्जी बढ़ती है, उसके बाद फिर एनर्जी कम होती है, पहले बढ़ती है, यानी इस तरह का हमें एक कर्व मिलता है, U और फिर U। ये पहले इसमें इजाफा होना, इसलिए इजाफा होना क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ह्यूमन बॉडी के, मसल के या वाटर के, सो दे आर इजेक्टेड। अच्छा, वो इजेक्ट तो हो गए, उनकी किनेटिक एनर्जी भी साथ शामिल हो गई, लेकिन कुछ देर के बाद इलेक्ट्रॉन बीइंग ए पार्टिकल वो ज्यादा देर तक पेनिट्रेट नहीं कर सकता। वो पेनिट्रेट 1 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, मैक्सिमम 3 सेंटीमीटर तक जा सकता है। उसके बाद उसने रुक जाना है, वो जल्दी स्टॉप होगा। जैसे ही वो स्टॉप हो जाएगा फिर यूनिवर्स के अल्लाह से एनर्जी में फॉल ऑफ आएगा। तो इस वजह से तो ये एक ऐसी चीज है जिसको हम Dmax कहते हैं, तो इसलिए इस इनवर्स के अल्लाह को अब हमने मॉडिफाई किया कि F+Dm/F+d², यानी ये रिलेटिव है। आप इमेजिन कर ले सिर्फ पहला कंपोनेंट, अगर if D is equal to dm तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, P is equal to 100% डोज, रेफरेंस डोज, वहां पे डोज परसेंटेज डेप्थ डोज 100% होता है। लेकिन आगे एक और कंपोनेंट है एक्सपोनेंशियल फैक्टर, अटेन्युएशन फैक्टर, दैट इज एक्सपोनेंशियल अटेन्युएशन एंड दैट इज आल्सो द अटेन्युएशन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय D minus dm, यानी अगर D और dm इक्विवेलेंट हो जाए तो यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल की पावर 0 और दैट विल बिकम 1 एंड यू विल गेट 100%। एंड द थर्ड वन इज द स्कैटरिंग फैक्टर, जो कि बड़ा नॉमिनल सा होता है, उसको समटाइम हम इग्नोर भी कर सकते हैं। सो दिस इज द फार्मूला व्हिच गवर्न व्हाट हैपेंस with the radiation dose inside the patient. So this is the diagram. You can see the central axis, the surface, the phantom, which is a water, Dmax या D0 इसको लिखा हुआ है रेफरेंस डोज को, and then the D certain depth. So यहाँ पे जो कैपिटल D और स्मॉल d दो डिफरेंट चीजें हैं। स्मॉल d का मतलब हमेशा होता है डेप्थ और कैपिटल D का मतलब है डोज। अगर आपके पास इस तरह Dmax लिखा हुआ और Dmax लिखा हुआ, इसका मतलब है डेप्थ ऑफ मैक्सिमम डोज, इसका मतलब है मैक्सिमम डोज। कैपिटल D रिप्रेजेंट डोज, स्मॉल d रिप्रेजेंट डेप्थ। यू कैन सी द ग्राफ, ये जो हमने शुरू में मैंने आपको बताए थे जो बहुत स्मॉलर एनर्जी के, वी हैव ए लेजर, यस इज इट वर्किंग। ये आपके पास है 0.04 मिलीमीटर एल्यूमिनियम HVL, यानी पुराने जमाने में एनर्जी का यूनिट ये था। उसके बाद ये B जो है ये आपके पास है कॉन्टैक्ट थेरेपी, जिसका HVL 15 मिलीमीटर AL। उसके बाद आर्थो वोल्टेज एंड देन मेगा वोल्टेज एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं कि जो स्मॉलर एनर्जी था, जो सबसे पहले हमारे पास के इसमें ये बिल्कुल ह्यूमन बॉडी में या वाटर में पेनिट्रेट कर ही नहीं पाते थे, बस ये 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर तक भी नहीं पहुंचते थे। लेकिन अब जो हमारे पास है, दिस इज द E, you can see that in the cobalt 60 gamma ray with an energy of 1.25, तो that has a capacity कि वो रेडिएशन के डोज को ज्यादा डेप्थ तक ट्रांसफर या ट्रांसमिट कर सकता है। दिस इज अनदर वन, यू कैन सी ये डिफरेंट एनर्जीज हैं, 10 MV, 25 MV, 4 MV, और ये कोबाल्ट 60 का मतलब है 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये MV है, एक्सरेज है, और ये 1.25 MeV कोबाल्ट 60 गैमा रे है, और ये HVL की फॉर्म में है, कॉपर 3 मिलीमीटर कॉपर HVL एनर्जी, यानी एनर्जी का एक दिलचस्प यूनिट 3 मिलीमीटर कॉपर। आप पूछ रहे हैं कि रेडिएशन है कितनी एनर्जी है, जवाब मिल रहा है 3 मिलीमीटर कॉपर कि यानी इसकी एनर्जी को आधा करने के लिए 3 मिलीमीटर कॉपर के थिकनेस से आप उसको कर सकते हैं। सो दैट वाज अ टाइम व्हेन वी यूज, लेकिन अब ये खत्म हो गया। अब हम इस
25 MV तक की एक्सरेज प्रोड्यूस कर सकते हैं और मुस्तकबिल में इससे भी आगे जाने का इरादा है। दिस इज व्हाट आई वाज शोइंग कि पहले डोज में इजाफा उसके बाद कमी, एंड दिस रीजन इज नोन एज बिल्ड अप रीजन। ये मैं यहाँ दिखा रहा था कि जब इलेक्ट्रॉन उसके साथ मिल जाते हैं तो फिर उनकी एनर्जी साथ शामिल हो जाती है एंड डोज बिल्ड अप। दो टर्मिनोलॉजीज, एक अब्जॉर्ब डोज है, ज़ाहिर है वो पहले कम फिर 100 तक जाना फिर नीचे आना। एक कर्मा का मतलब है किनेटिक एनर्जी रिलीज्ड इन द मैस, किनेटिक एनर्जी रिलीज्ड इन द मीडियम। वो ज़ाहिर है जहां से रेडिएशन का सोर्स है यहाँ सबसे ज्यादा है, उसके बाद जैसे ही जाते जाएंगे वो कम होता जाएगा। दिस डॉटेड लाइन इज शोइंग द किनेटिक एनर्जी रिलीज्ड इन द मैस, द सेकंड वन इज द रेड लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द अब्जॉर्ब डोज। So there are different terminologies. One I have just explained, that is the PDDR, percentage depth dose. There is another concept of the TAR, tissue air ratio. ये PDD और TAR एक दूसरे के अल्टरनेट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। हमारे पास दो टेक्निक्स है रेडियोथेरेपी के लिए। एक को हम कहते हैं SSD टेक्निक, जहां पे सोर्स टू सरफेस डिस्टेंस को हम कांस्टेंट रखते हैं, ये 100 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर है। दूसरी टेक्निक है SAD, सोर्स टू एक्सेस टेक्निक, सोर्स टू एक्सेस डिस्टेंस। उसमें हम जो रेडियोथेरेपी रूम होता है उसमें हर दीवार पे लेजर लाइट्स होते हैं, वो आपस में अलाइन करते हैं, उसमें हम जो ट्यूमर है उसको सेंटर पे लेके आते हैं, तो उसको एसएडी टेक्निक कहते हैं। तो फिर वहां पे पीडीडी की जगह पे एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है TAR, टिश्यू एयर रेशो। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे एक डिवाइस है, चैम्बर है, ये वाटर फैंटम है, उस फैंटम के अंदर यहाँ मौजूद है, हमने डोज मेजर किया, उसके बाद इस फैंटम को हटा दिया, ये चैम्बर इसी जगह पे मौजूद है लेकिन अब वो एयर में मौजूद है, फिर डोज मेजर किया। अब इन दोनों डोजेस का जो रेशो है वो टिश्यू एयर रेशो कहलाता है। टिश्यू के अंदर डोज और एयर के अंदर डोज, उन दोनों डोजेस का जो रेशो है दैट इज नोन एज टिश्यू एयर रेशो। फिर वहां पे डोज कैलकुलेशन में हम पीडीडी की बजाय यानी परसेंटेज डेप्थ डोज की बजाय टिश्यू एयर रेशो यूज करते हैं। दिस इज द सेटअप, दिस इज द वाटर फैंटम। नॉर्मली दिस इज 30 by 30 by 30 यानी 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ, 30 सेंटीमीटर इसकी विड्थ और 30 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ होती है। और इसके अंदर हम ये चैम्बर रखते हैं और फिर चैम्बर को मूव भी करवाते हैं ताकि हर डेप्थ के अंदर हमें डोज की इंफॉर्मेशन हो। इसको फिर हम रेडियोथेरेपी मशीन के नीचे रखते हैं और जैसे ही वो नीचे जाता जाएगा तो वी विल गेट समथिंग, सम इंफॉर्मेशन लाइक दैट। दीज आर नोन एज आइसोडोज कर्व। आइसोडोज कर्व का मतलब, आइसो का मतलब आपको पता है कांस्टेंट, आइसोथर्मल हीट टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। आइसोटोप्स, आइसोडोज का मतलब है डोज कांस्टेंट। एक ऐसा सरफेस, अब इस सरफेस पे 90%, इस सरफेस पे 80%, इस पे 70%। वाटर की लेयर समझ लें कि पहला टॉप लेयर, फिर उसके 1 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर लेयर, हर लेयर पे डोज डिफरेंट होगा, दैट विल बी द कांस्टेंट एंड दीज आर द नोन एज आइसोडोज सरफेसेस। बट वी हैव द ऑप्शन टू मॉडिफाई देम। ये उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन आपके पास जो ट्यूमर होगा वो समटाइम इस तरह फ्लैट नहीं होगा, उसका कंटूर बड़ा डिफरेंट होता है। सो देन वी नीड अनदर टेक्निक, वी कॉल देम वेज। ये वेज हमने यूज किए हुए हैं जिससे आप इसी आइसोडोज सरफेस को टिल्ट कर सकते हैं। आप वेज यूज करें, वेज आपके पास बने बनाए भी होते हैं और आपके पास जिसको हम एनहांस डायनामिक वेज कहते हैं, जो आप वर्चुअली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे ज्यादा डोज मिलना चाहिए। अगर ट्यूमर की शेप इस तरह की है तो डोज को हमने इस तरह से मॉडिफाई किया। इसकी जरूरत इसलिए है, आप इसकी मिसाल ऐसे समझें कि आपके ये घर में लॉन है, आप चाहते हैं कि यहाँ पे घास को ज्यादा पानी दें, वहां पे कम पानी दें, तो आप एक वेज ऊपर यूज करें जहां से पानी गिर रहा है, तो वहां पे पानी थोड़ा आने के बाद उसका रास्ता रोक दे लेकिन यहाँ पे चलता रहे। सो ये देखिए यहाँ पे थिकनेस ज्यादा जो टॉप पे है, दिस वन, यहाँ पे थिकनेस कम है, जो जहाँ पे थिकनेस कम है यहाँ पे डोज आगे पुश हो गया, लेकिन जहाँ पे थिकनेस ज्यादा है डोज एब्जॉर्ब हो गया, तो ये जो स्ट्रेट लाइन में थे ये नीचे टिल्ट हो गए। सो दैट्स ए कंट्रोलिंग मॉडिफिकेशन। इसी तरह मॉडिफिकेशन के लिए और बहुत सारी चीजें यूज होती रही है, ये अब आजकल नहीं है लेकिन चंद अरसा पहले तक डिफरेंट हॉस्पिटल में हम ब्लॉक्स बनाते थे। क्या आपने आसिफ बनाए होंगे, ब्लॉक्स बनाए हैं, स्टायरोफोम के ब्लॉक्स इस तरह बैठते थे। ये एक्सरे उसका पेशेंट का यहाँ पे रख के हमें डॉक्टर कहता था कि इस जगह पे डोज नहीं देनी। अब इस जगह पे डोज कैसे नहीं देनी, आपने जो मशीन है उसके XY कोलिमेटर्स हैं, X और Y दोनों आपने ओपन किया, वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में है। अब ट्यूमर में आपने ये स्क्वायर एक्सरे है लेकिन इस जगह पे नहीं देनी, तो इस जगह को कैसे रोके हम, फिर यहाँ पे स्टायरोफोम, ये ऊपर एक फोम से मटेरियल है, इसको पेंसिल की तरह इसके ऊपर घुमाते थे तो वो फोम उतना ही कट जाता था।
जब वो फोन उतना ही कट जाता था, फिर हम क्या करते थे, हमारे पास एक पकोड़े तलने वाली कढ़ाई है, लेकिन उसमें पकोड़े की बजाय लेड होता था, लेड उसमें पानी की तरह पिघला हुआ, उस लेड को हम किसी पवे से उठा उठा के इस फोम के अंदर डाल देते थे। थोड़ी देर बाद जब वो ड्राई हो जाता था, ठंडा हो जाता था, तो इस तरह के ब्लॉक तैयार हो जाते थे। इस ब्लॉक को फिर हम ट्रीटमेंट मशीन के रास्ते में रखते हैं ताकि उस जगह पे रेडिएशन अब ना जाए जिसको ब्लॉक करना है। तो दीज आर नोन एज ब्लॉक। और ये स्टायरोफोम कटर और इसका सारा सेटअप ये मेडिकल फिजिसिस्ट साइम अल्ताफ आपने बनाए हैं, या आपके आने आपसे पहले ये खत्म हो गया? क्योंकि अब उसके बाद हमारे पास नई चीज आ गई जिसको हम MLC कहते हैं, ये है मल्टी लीफ कोलीमेटर। अब मशीन के अंदर ये आपके पास कोलीमेटर्स मौजूद है, ये तकरीबन फॉर एग्जांपल 60 ये है और 60 ये है, ये दोनों साइडों में मौजूद होते हैं। आप जो ट्यूमर की शेप है वो बता दें तो ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटर की हेल्प से कुछ लीफ ये यहाँ तक आ गया, ये यहाँ रुक गया, ये उस तरह का डिजाइन बना देंगे मशीन के रास्ते में जो आपका ट्यूमर का डिजाइन है या उसकी शेप है। सो अब आपको उस ब्लॉक्स को बनाने की जरूरत नहीं होती, जो वो ऑटोमेटिकली इस मल्टी लीफ कोलीमेटर जो टंगस्टन या लेड की बनी होती है और ये मशीन के हेड में मौजूद होते हैं। सो दैट वाज एन ओल्डर टेक्निक, बट दिस इज व्हाट व्हिच इज अवेलेबल ओवर हियर। ये जो MLCs है यहाँ, इसकी ये मशीन है, ये जिस जगह पे ये तस्वीरें हैं लीनियर एक्सेलरेटर की, जहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्यूब और इसकी डिफरेंट जो मैकेनिज्म है, लीनियर एक्सेलरेटर की मैकेनिज्म आप लोग जानते हैं, समझते हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जाता है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन बीम चाहिए तो फिर उसके रास्ते में टारगेट्स को हटा देते हैं, डायरेक्टली आपको इलेक्ट्रॉन बीम मिलता है। लेकिन अगर आपको एक्सरे चाहिए तो फिर उसके रास्ते में एक टारगेट आता है जिससे वो उनके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाता है और फिर हमें एक्सरे जनरेट होकर यहाँ पे एक्सरेज मिलते हैं। दीज आर द इमेजेस। ये जो मशीन है इसको आप 360 एंगल पे रोटेट कर सकते हैं। ये जो पेशेंट काउच है ये भी आप ऊपर नीचे मूव भी करवा सकते हैं और इसको भी रोटेट कर सकते हैं, ये भी रोटेट हो सकता है। सो आपके पास जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की मैंने बात की, दे ऑल आर अवेलेबल विद द हेल्प ऑफ दिस लीनियर एक्सेलरेटर। और इसके साथ इमेजिंग की भी फैसिलिटी होती है, अगर आपने कोई ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट आपने उसकी कोई पोर्टल इमेजेस लेने हैं तो दे आर आल्सो अवेलेबल। This is the water phantom, which is again I'm showing, and that is placed under the linear accelerator during the commissioning or during the dosimetric practice, and you can measure the dose, the percentage depth dose, the tissue wear ratio, tissue maximum ratios, scatter component जो आपका phantom scatter factor है, different dosimetric quantities are used for the treatment planning. They all are. आजकल अगर आप बीनो में जाए तो उन्होंने नया linear accelerator लिया है और वो डेली आज यही एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। Me and Siptan visited last week. So they were doing the commissioning of the linear accelerator, having a water phantom over here, and they are measuring the dose. And though that dose is also being used as an input in the treatment planning system या software जिसकी मैंने बात की थी, जिसमें आपको मशीन डाटा चाहिए, तो ये वो मशीन डाटा है। इसमें हर फील्ड साइज, हर डेप्थ, विद वेज, विदाउट वेज, हर ऑप्शन के साथ डोज मेजर करके उस सॉफ्टवेयर को पहले से बता दिया जाता है, ताकि जब बाद में हम पेशेंट डाटा दें तो वो उसको प्रोसेस करे और वो हमें दे। डोजीमेट्री की एक और प्रैक्टिस भी है। डॉक्टर आलिया इज फेमिलियर विद दिस टेक्निक। शी डन this sort of the job during her PhD as well as postdoc. We call it a gel dosimetry. We prepare the gel in the lab. कि जो मैंने आपको वाटर फैंटम बताया उसमें हम एक चैम्बर यूज करते हैं। वो चैम्बर बेसिकली हमें चार्ज मेजर करके देता है, उस चार्ज को फिर हम कन्वर्ट करते हैं डोज में। लेकिन जो जेल है ये बगैर किसी डिवाइस के आपको डोज मेजर करके देगा। हम एक टिश्यू इक्विवेलेंट जेल बनाते हैं, हमारे पास अपने डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट में जेल डोजीमेट्री लैब है। केमिकल्स के हेल्प से हम एक इस तरह का फ्लूइड प्रिपेयर करते हैं। जब इसको प्रिपेयर करते हैं तो प्रिपेयर करने के बाद सबसे पहले हम इसकी जाके MR इमेज लेते हैं। MRI से इमेज अपने पास सेव कर लिया, उसके बाद इसको जाके रेडिएशन देते हैं, लीनियर एक्सेलरेटर के नीचे रख देते हैं, उसको डोज दिया सर्टेन अमाउंट, डोज देने के बाद दोबारा MRI के लिए ले जाते हैं। अब डोज से पहले और डोज के बाद जो MR इमेजेस आपको मिलेंगे, उन इमेजेस का जो डिफरेंस है वो सॉफ्टवेयर, हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जांपल इमेज जे, उससे आप उन इमेजेस का डिफरेंस कैलकुलेट करें जो कि आपको डोज को क्वांटिफाई करके देगा। आपने कोई डिवाइस यूज नहीं किया, एक जेल था उसको रेडिएट किया, लेकिन रेडिएशन से पहले और बाद में जो उसकी इमेजेस ली, उन इमेजेस के डिफरेंस से आप डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। That is the gel dosimetry. Ultimately, you will get this sort of the characteristics. ये PDD जो मैंने आपको पहले बताया, इसी तरह another image for the various energies, but this is for the electron. ये जो previous one है, this is for the photon. You can see अगर
18 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर तक भी 30% डोज आपके पास अवेलेबल है। यानी अगर आप फोटान यूज कर रहे हैं, अगर ये पेशेंट है तो यहाँ पे डोज, यहाँ पे डोज, यहाँ तक भी 10-20% डोज पेशेंट को मिलेगा। ट्यूमर यहाँ पे था। अब ये हमारे पास एक कंस्ट्रेंट भी है कि ये आपके पास पेशेंट है, यहाँ पे ट्यूमर है और ये रेडिएशन दे रहा है। अनफॉर्चुनेटली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये मैक्सिमम डोज आपको यहाँ देगा, यहाँ पे 2-3 सेंटीमीटर यहाँ। अब हमने डोज इस जगह पे देना है, अनवांटेड चीज यहाँ पे है, ज्यादा डोज यहाँ पे वो बेचारा तो नॉर्मल टिश्यू है। अब ये एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है कि जो नॉर्मल टिश्यू है यहाँ ज्यादा डोज मिलेगा, उसके बाद डोज कम हो रहा है। और हमारा जो ट्यूमर है वो यहाँ पे है, इस जगह पे नीचे। यहाँ पे कितनी परसेंटेज है डोज की, वो कम है, 50% है, 60% है। जहाँ पे ट्यूमर नहीं है वहाँ पे डोज 90% है, जहाँ पे ट्यूमर है वहाँ पे डोज कम परसेंट है। ये एक ऐसा फैक्टर है जिसका फिर इलाज हमने ढूंढा। एक तो इसका इलाज ये है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टीज है वो जल्दी फॉल ऑफ करता है। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन सर्टन, ये 15 अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का देखें आप, 15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो 8 सेंटीमीटर पे खत्म, उसका सारा डोज वहीं पे उसने डिपॉजिट कर दिया। अगर उससे कम में जो है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 9 mega electron volt, you can see the total energy is deposited near the skin and within 2, 3, 4, 5 centimeters. There are different factors which we use in the electron beam. They are known as mean energy, most probable energy, and the practical range of the electrons. The practical range of the electron is quite limited as compared to the photon. Photon में patient के exit point पे भी dose exist करता है, लेकिन यहाँ पे dose यहाँ तक खत्म हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि हम मल्टीपल डायरेक्शन से, अगर फोटान से ही करना इलाज नागुजीर है तो फिर हम ज्यादा फील्ड्स यूज करते हैं। ये डिफरेंट, ये आपके पास मैंने कोबाल्ट, देन 4 MeV, 6 MeV, 12 MeV, इसमें एक कोबाल्ट 60 है जो कि 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रॉन की 4 एनर्जीज है। सो this is the way the planning is done with the help of the computer. We have the images and we apply the patient data, the machine data, and then the various parameters over there. और ट्रीटमेंट प्लानिंग हमें इस तरह की इमेज बना के देता है कि दिस इज द डोज डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द व्हाट, जो जितना महंगा सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया उसका काम क्या है ये बताना। अब रेडिएशन एक ऐसी चीज है जो आपको कभी नजर नहीं आ सकती और वो आप उससे कोई फील भी नहीं होता। जैसे आप कैमरे से किसी की तस्वीर लेते हैं उसको पता भी नहीं चलना, अगर फ्लैश लाइट ऑफ है तो अगले को ना पेन होना है ना पता चलना है। सिमिलर इज द केस विद द रेडिएशन। लेकिन उस महंगे सॉफ्टवेयर ने ये किया कि वो रेडिएशन जो हमें पेशेंट से बाहर भी नजर नहीं आता, वो पेशेंट के अंदर भी जाके उसने एक एक पॉइंट पे डोज डिस्ट्रीब्यूशन हमें मेजर करके दे दी। इसके सेल कमजोर है वहां तक। ये जो अब यहाँ पे एक चार्ट है, इसका इस पे लिखा हुआ है कि 100, रेड कलर का मतलब है 100% डोज, येलो कलर का मतलब है 70%, ग्रीन कलर का मतलब है 60-50 और ब्लू का मतलब है 20-30। सो अब हमने क्या किया, वो जो कंस्ट्रेंट था कि यहाँ पे मैक्सिमम डोज मिलता है, हमने एक ही पेशेंट को जो डोज देनी थी वो टुकड़े टुकड़े करके डिफरेंट डायरेक्शन से दे दी, कुछ इस डायरेक्शन से, कुछ इस डायरेक्शन से, कुछ इस डायरेक्शन से, सो दैट वो सारे के सारे बीम उस जगह पे इंटरसेक्ट करें जहां पे हमें मैक्सिमम डोज चाहिए। हमने जो बाकी डोज था उसको तकसीम कर लिया, वरना नॉर्मल टिश्यूज को ज्यादा डोज मिलता और जो टारगेट था उसको कम डोज मिलता। This sort of the techniques are called IMRT, intensity modulated radiation therapy. We can modulate the intensity. हम बीम की इंटेंसिटी को मॉड्यूलेट यानी अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल कर रहे हैं और अल्टीमेटली दिस सॉर्ट ऑफ द ये इमेज हमें सॉफ्टवेयर देता है। और अगर हमें ये प्लान एक्सेप्टेबल है तो फिर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, अगर नहीं तो फिर रीप्लान करते हैं। दिस सॉर्ट ऑफ द थिंग्स, ये भी आपके पास एक चार्ट है। इसी तरह ये आप देख सकते हैं कि डिफरेंट प्लानिंग है जो यहाँ पे मौजूद है। इफ दैट कुड वर्क, जो पहला है उसमें हमने स्पाइनल कार्ड को सिक्योर किया हुआ है, डिफरेंट एंगल से रेडिएशन दी हुई है। सो द रेड कलर इज लिमिटेड टू द ट्यूमर, सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। आई विल बी वाइंडिंग इट अप quickly. This is the way radiations are given and there are imaging modalities. Image guided radiation therapy एक टेक्निक है जिसमें ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट हम इमेजेस भी लेते रहते हैं, क्योंकि आप 25-30 दिन तक जब पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो तो फिर हो सकता है कि कुछ दिन के बाद ट्यूमर श्रिंक कर गया हो, ताकि हम उसको रेगुलरली उसको देखते रहें और उसको नोटिस करते रहें। इसके अलावा एक और चीज है, क्योंकि फिजिसिस्ट का जो काम है वो ट्रीटमेंट प्लानिंग और डोजिमेट्री है।
अब जो डेली पेशेंट की ट्रीटमेंट होती है वहां पे ना डॉक्टर खड़ा होता है ना फिजिसिस्ट होता है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजिस्ट या नर्सेज होती है। अब नर्सेज जो है वो उन पैरामीटर को, जो आपने प्लानिंग की पैरामीटर, यानी आपने प्लानिंग में क्या बताया कि इसको 5 डिफरेंट डायरेक्शन से रेडिएशन देनी है, कौन सी वाली एनर्जी देनी है, इलेक्ट्रॉन या एक्सरे। इलेक्ट्रॉन अगर देना है तो इलेक्ट्रॉन की कौन सी एनर्जी, आपके पास 5-6 अवेलेबल है। वेज कहाँ पे लगाना है, कहीं पे नहीं लगाना, वो तमाम पैरामीटर उसकी प्लान के साथ होते हैं। पुराने जमाने में ऐसा होता था कि अगर उस टेक्नोलॉजिस्ट से गलती हो गई, उसने वेज 15 के वेज की बजाय 30 का वेज लगा दिया, इलेक्ट्रॉन की बजाय फोटॉन सिलेक्ट किया, 6 की बजाय 9 सिलेक्ट किया, तो जाहिर है पूरा ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव आपका डिस्टर्ब और ट्रीटमेंट के आउटकम्स भी टोटली डिफरेंट। लेकिन अब जो जदीद मशीनें हैं उनके साथ हमने इंटेलिजेंट डोजीमेट्री सिस्टम भी बना रहे हैं आजकल, कि आप अगर उस प्लानिंग के पैरामीटर्स को वायलेट करोगे तो मशीन एग्जीक्यूट करने से इनकार कर देगा। जो फिजिसिस्ट ने फाइनल प्लान किया, अगर उसके मुताबिक आप तमाम पैरामीटर सेलेक्ट करके रेडिएशन की बीम ऑन करोगे तो वो हो जाएगा, वरना वो ऑन ही नहीं होगा। सो इंटेलिजेंट डोजीमेट्रिक सिस्टम पे काम हो रहा है जो कि उसके साथ अटैच होंगे, और कुछ आप अभी जदीद मशीनों में भी ये फैसिलिटी है कि वो उन पैरामीटर से हट के किसी और चीज पे काम नहीं कर सकते। उसके बाद बहुत सारे क्वालिटी एश्योरेंस पैरामीटर्स हैं, हर चीज के हैं, लीनियर एक्सेलरेटर्स के भी हैं। ये लीनियर एक्सेलरेटर जो है, हम जब किसी भी हॉस्पिटल में होते हैं, वी आर सपोज टू फॉलो सम इंटरनेशनल प्रोटोकॉल। फॉर एग्जांपल हम दो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, एक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, या एक AAP हम जिसको हम कहते हैं, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिसिस्ट एंड मेडिसिन। इनके गिवन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। इनका पहला प्रोटोकॉल यहाँ पे आता है स्टाफिंग का, कि आपके पास अगर 300 पेशेंट एनुअली ट्रीट होते हैं तो आपको एक फिजिसिस्ट चाहिए, 600 है तो 2 चाहिए, 900 है तो 3 चाहिए, एंड सो ऑन। इस तरह डॉक्टर कितने चाहिए, नर्सेस कितने चाहिए। उसके बाद हर मशीन की, मैंने यहाँ सिर्फ लीनियर एक्सेलरेटर की पुट की है, लीनियर एक्सेलरेटर की 3 क्वालिटी एश्योरेंस की डिमांड है, जो आपने एक्सपेरिमेंट डेली, ये पहला चार्ट है डेली का, यानी ये वो काम है जो डेली करने हैं, लीनियर एक्सेलरेटर क्वालिटी एश्योरेंस डेली। उसके बाद नेक्स्ट है, ये वो चीजें हैं जो मंथली करने हैं, और जो थर्ड है ये एनुअली है। यहाँ पे ये सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं और उनकी टॉलरेंस भी गिवन है। इससे ज्यादा टॉलरेंस आप अगर हो तो फिर आप उसको बेहतर कर ले। कुछ चीजें ऐसी हैं जो फंक्शनल होनी चाहिए, कुछ जिनकी टॉलरेंस गिवन है, डेली, वीकली, मंथली एंड एनुअली द क्वालिटी एश्योरेंस इज डन, and then ultimately these type of the linear accelerator, the medical linear accelerator, are used for a better treatment of the cancer patient. Thank you. Any question from you? Thank you very much, sir, for such a nice and wonderful talk about radiation talking and linear accelerator. I believe there will be many potential questions from the audience online and offline. Please. As you mentioned in the previous slide that which therapy we can use for the treatment of cancer instead of therapies like X-rays that can damage the cells near to the cancer cell. I mean, this will also become cancerous and mean to normal cells and only cancerous and radiations. Exactly, that's a very good question, because these are the side effects of the radiations. Because जो मैंने शुरू में बताया कि कैंसर के काजेज आज भी अननोन है, लेकिन पता ये चला है कि कभी कभी रेडिएशन की वजह से, यानी जो एक्सरे बाजार में आप करवाते हैं, वो जो एक्सरे वाला बंदा है वो बेचारा सबसे ज्यादा रिस्क पे है। आइडियली वो जब एक्सरे लेता है तो उसने शील्डिंग वाले वाल रखे हुए हैं, उसके पीछे उसने छुप जाना होता है ताकि वो अपने आप को शील्ड करे। आसिफ ने हॉस्पिटल में काम किया हेल्थ फिजिसिस्ट के तौर पे, लेकिन हमारे यहाँ वो लोग बेचारे बड़े वल्नरेबल होते हैं और वो खतरे में होते हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है रेडिएशन की वजह से। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कोई मोटरसाइकिल से गिर के रोड पे गिरे, चोट लग गई और उस चोट अल्टीमेटली कैंसर बन गया। कैंसर क्यों होता है? जो इंसान का जो सेल है उसके अंदर 2 इंस्ट्रक्शन अल्लाह ताला ने पहले दी हुई है। नंबर 1 कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, नंबर 2 आपने ग्रो कैसे करना है, हर वीक या हर मंथ या हर साल कितना बढ़ना है, ग्रो होना, डैमेज होना, वो उसकी बेसिक डिफॉल्ट इंस्ट्रक्शन है। अगर किसी वजह से वो अपनी इंस्ट्रक्शन को भूल जाता है, इसको कैंसर कहते हैं।
वो भूल जाता है मेरा काम क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, या वो भूल जाता है मैंने हफ्ते में डबल होना था वो 2 दिन में डबल होना शुरू कर दिया। क्यों ऐसा होता है आज तक अननोन है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी, जैसे स्मोकिंग से लंग कैंसर की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, हर स्मोकर को कैंसर नहीं होता, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। रेडिएशन जो लेते हैं, जो नॉर्मल हालात में भी, या इवन आप कह रहे हैं जो नॉर्मल टिश्यूज को भी रेडिएशन मिलती है, वो डैमेज होते हैं। इस वजह से कैंसर की ट्रीटमेंट एक दिन में नहीं होती, 25-30 दिन। आज रेडिएशन का डोज दे दिया, पेशेंट घर चला गया, 24 घंटे के बाद जब दोबारा आएगा, ये भी अल्लाह ताला ने दिया है कि जो नॉर्मल टिश्यूज हैं वो रिकवर कर जाते हैं। आपको चोट लगती है, खून निकला, तो कुछ दिन के बाद या थोड़ी देर हाथ ही रख ले तो हो सकता है वो जुड़ जाए, वो जुड़ जाता है, आपस में कनेक्ट हो जाता है। इसी तरह वो जो डैमेज टिश्यू है 24 घंटे के बाद वो दोबारा ठीक हो जाएंगे, लेकिन एबनॉर्मल टिश्यू ठीक नहीं होगा। अभी मतलब यूरोपियन कंट्रीज में या मतलब जैसे कि एडवांस टेक्नोलॉजीज आ रही है, कोई ऐसी थेरेपी है जो एग्जैक्ट जो हमारे पास कैंसर सेल है उसको ट्रीट कर सके, एग्जैक्ट उसके ऊपर जो रेडिएशन। देखिए यस, ये भी बड़ा खूबसूरत सवाल है। आजकल जो जिस पे हम काम कर रहे हैं ना वो प्रोटॉन थेरेपी है, यानी हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो पहले चला लेकिन इलेक्ट्रॉन वाज टोटली डिफरेंट, बट प्रोटॉन थेरेपी मैं जब 2000 आपने 14 बताया, 2012 में मैं पोस्ट डॉक कर रहा था यूसीएल में, तो उस वक्त उनका प्रोटॉन थेरेपी सेंटर बन रहा था। और उस वक्त अमेरिका में हम पढ़ते थे कि अमेरिका में प्रोटॉन थेरेपी का उसका एकेडमिकली शुरू किया, क्लिनिकली शुरू नहीं किया, वो अभी उस पर तहकीक कर रहे थे। तो अब बहुत सारे लोगों ने प्रोटॉन पे क्लिनिकली भी काम, पाकिस्तान में अभी नहीं पहुंचा, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में प्रोटॉन थेरेपी, और प्रोटॉन थेरेपी में ये जो ये पीपीडी कर्व है, तो इसको हम यूं कंट्रोल करते हैं कि ये यूं होके इस तरह करते हैं, जहां पे ट्यूमर है वहां पे डोज उसका ज्यादा कर सकते हैं। ये जो वो ब्रैग्स लॉ पढ़ते हैं, उसी ब्रैग्स पीक को अपनी मर्जी के मुताबिक शिफ्ट करना किसी जगह पे, that is being possible with the help of the proton therapy, and in future that will be possible. We will be securing the normal tissues at maximum. Very good questions, both questions, mashallah. And sorry, one thing more, we have like circular experiments, and we are working with all the transcribers. They have worked with very fine, like electron boards. They have big regions, like they have synchrotron copy, they have synchrotrons, and as well as we have Sesame and Jordan. They are also doing this. Yes. So for us, thinking to go there. Exactly, that too is an option. Yes, on that option, शौकत खाना में भी, वन cyclotron पे भी वो उनका भी एक सेटअप है उनके पास. So that is also an option in future. Basically, the objective is to accelerate the electron at maximum, to use that electron beam to kill the unwanted cells. So इसको कितना controlled mechanism आप कर सकते हैं, that is the future. Computer की उसकी integration है, उसकी बाकी जो collimating system है, ये सारा कुछ इस पे काम कर रहा है. Jordan says in a big collaboration. Basic purpose of that collaboration is to work on this medical physics. We have next question. Why is cobalt 60 preferred for treatment? Cobalt 60 is never preferred now. अब तो cobalt 60 को बिल्कुल प्रेफर नहीं करते. cobalt 60 क्योंकि एक ही एनर्जी है गैमा, और वो भी है 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. उसकी जगह पे लीनियर एक्सेलेरेटर हम इसलिए यूज करते हैं, एक तो लीनियर एक्सेलेरेटर ड्यूअल मॉड है, उसमें इलेक्ट्रॉन का ऑप्शन भी है, एक्सरे का ऑप्शन भी है, और इलेक्ट्रॉन के अंदर फिर आपके पास 6 एनर्जीज, फोटॉन या एक्सरे के अंदर आपके पास 2 एनर्जीज, टोटल 8-10 टाइप की एनर्जीज, और फिर 2 टाइप की एनर्जीज, 2 टाइप के बीम, फोटॉन यानी एक्सरे और इलेक्ट्रॉन. जबकि आपके पास कोबाल्ट में सिर्फ और सिर्फ एक फोटॉन यानी गैमा एनर्जी है, और वो भी लिमिटेड है 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे. दैट इज नॉट प्रेफर्ड एट ऑल. डॉक्टर प्रोफेसर साहब, अच्छा, Is there any question from the audience? Yes, for us. We are moving towards some high energy, but there are some disadvantages as well. What are the disadvantages actually that you can look at, say that threats related to use of high energy beams or particles in such kind of treatments? What are the threats that we are expecting that we are going towards high energy particles or high energy beams to create such kind of? देखिए थ्रेट तो डेफिनेटली है. अगर आप उसको कोई भी ऐसी चीज है ना जो आपके लिए बेनिफिशियल है, अगर आप उसको पॉजिटिवली यूज नहीं करेंगे, दैट्स अ थ्रेट.
चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो कुछ भी हो। इवन इंटरनेट है, उसकी कितनी बेनिफिट है और उसके नुकसान भी हैं। तो ये इसी तरह हाई एनर्जी, अगर आप मैं किसी कहीं ऐसे हल्के फुल्के गपशप में कोई कह रहे थे कि खुदकुशी करने के कितने तरीके हो सकते हैं, कौन सा आसान है कौन सा मुश्किल है। मैंने कहा किसी ने बड़ी आसानी से मरना है, उसको किसी लीनियर एक्सेलेरेटर के नीचे लटा दो, रेडिएशन खोल दो, घंटे बाद वो बंदा मर जाएगा। ठीक है ना, उसको कोई पेन ना कुछ, जैसे बाकी हम कोई बंदा बिल्डिंग से छलांग लगाता है, कोई ट्रेन की पटड़ी के आगे लेट जाता है। सो इसके अंदर इतनी एनर्जी है कि वो सारे सेल डैमेज, यानी हम जब प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक चार्ट होता है, उसको मुसलसल देख रहे होते हैं। जैसे वो पायलट हर वक्त अपना चार्ट देख रहे होते हैं कि अल्टीट्यूड वगैरह वगैरह, हमें बताया जाता है कि अगर आई है तो इसकी टॉलरेंस इतनी है, स्पाइनल कार्ड है तो उसकी टॉलरेंस इतनी है। अगर स्पाइनल कार्ड को आपने उससे ज्यादा ग्रे डोज दे दिया तो स्पाइनल कार्ड विल नो मोर, वो पेशेंट बेचारा अब उठ के बैठने के काबिल नहीं होगा। तो उसके अंदर तक तो डोज वो टॉलरेट कर सकता है, लेकिन उस लिमिट को एक दफा आपने टच किया, स्पाइनल कार्ड इज डैमेज्ड। सो इस हाई एनर्जी के साथ ये सारी चीजें लिंक्ड हैं। There are next question from the audience. So, if there are any others, if there are any plan of our students by a women accelerator, this is one of We dreamed it, but actually we cannot do that because हम linear accelerator ले भी लेंगे यूनिवर्सिटी में तो फिर पेशेंट कहाँ से लाएंगे। इसलिए दुनिया में मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज देखी हैं, तो उन्होंने लीनियर एक्सेलेरेटर कभी भी उल्टा उन्होंने ये किया। डॉक्टर आलिया वाज इन यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी। यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी जो है स्कॉटलैंड में मौजूद है, वो डंडी शहर में एक जगह पे, पूरी यूनिवर्सिटी एक और जगह पे है, लेकिन उनका जो मेडिकल फिजिक्स डिपार्टमेंट है वो उनका एक हॉस्पिटल है, 9 वेल्स हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल के अंदर बनाया हुआ है। मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में था, तो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन वालों का एक बहुत ही ह्यूज हॉस्पिटल है जिसका नाम UCLH, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल के अंदर रेडियोथेरेपी का सेटअप वहां पे है, तो वो एक्सपेरिमेंट करने हम हॉस्पिटल में जाते थे। सो इसके लिए हमेशा हमें हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेशन, इवन हम MRI CT इस तरह की मशीनें भी खरीद लें तो वी विल मिस द पेशेंट्स देन। So we need strong collaboration between our institute and hospital. We may not need to buy them. Okay, thank you very much. Okay, one question. Sir, as you mentioned, there are so many side effects of this method as well as this is so much expensive. और इसके अलावा जब पेशेंट मतलब एक सीरियस कंडीशन में चला जाता है, हाई स्टेज में, तो 40 to 50% चांस होते हैं कि वो रिकवर नहीं कर सकते इस मेथड से। So do you think कि मतलब there are so many things need to do in this method, और ये मतलब कि इतना ज्यादा एक्सपेंट नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं लेट मी क्लियर इट। कैंसर के नॉर्मली 4 स्टेजेस होते हैं। कैंसर अगर इनिशियल स्टेज 1 और 2 में हो तो दैट इज कंप्लीटली क्योरेबल, लेकिन अगर 3 और 4 में है तो उसकी क्योरेबल होने की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत कम होती है। आमतौर पर डिफरेंट हॉस्पिटल है, फॉर एग्जांपल शौकत खानम हॉस्पिटल है, उनकी पॉलिसी ये थी कि वो स्टेज 1 और 2 के पेशेंट को प्रेफर करते हैं। उनको पता है कि इसका इलाज कर लेंगे तो ये बंदा बच जाएगा। 3, 4 को आखिरी स्टेज वाले को वो, क्योंकि उनके पास आ रहा है, अगर क्वालिटी ट्रीटमेंट आपने करनी है, अगर आपके पास 10 बेड है तो 10 पेशेंट ही होने चाहिए। 10 बेड पे वो 100 पेशेंट नहीं लिटा सकते। आमतौर पे लोग कहते हैं वो हॉस्पिटल हम गए थे उन्होंने हमें लिया ही नहीं, कितने गंदे हैं। वो ज़ाहिर है उनके पास भी एक लिमिटेड डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, मशीनें हैं। तो अगर फर्स्ट 2 स्टेजेस में है तो वहां पे अगर इवन रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी या सर्जरी से पेशेंट मुकम्मल सेहतयाब होकर दोबारा अपनी नॉर्मल जिंदगी में भी वापस आए। लेकिन अगर स्टेज 4 या 3 है, हम इन ट्रीटमेंट्स को 2 नाम देते हैं। एक को हम कहते हैं पैलिएटिव ट्रीटमेंट और एक को कहते हैं क्योरेटिव ट्रीटमेंट। जो पहले 2 स्टेजेस हैं उनकी ट्रीटमेंट को हम क्योरेटिव ट्रीटमेंट कहते हैं कि ये पेशेंट कंप्लीटली क्योर हो सकते हैं। पैलिएटिव ट्रीटमेंट का मतलब है जब पता होता है कि अब इसके बचने के चांसेस नहीं है, बट ट्रीट दिस पेशेंट जस्ट टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द रिमेनिंग लाइफ एंड टू रिड्यूस द पेन द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम। वरना ये नहीं है कि इससे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसी दिन तमाम तीनों मेथड से अगर इनिशियल स्टेज का कैंसर हो वो कंप्लीटली क्योर भी हो सकते हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Very, very explained. Now I would like to invite Dr. Shwe for concluding remarks. Thank you very much, sir.
Professor Dr. Said Ahmed Gulzar Sahab and our Honorable DSS Sahab and respected colleagues, Madam Alia, Dr. Zahida and all our colleagues. Thank you for sparing time for this event. Actually, the idea behind this seminar series was to give the chance to our students, to our institute students, to interact with the international and national well-renowned speakers, well-renowned scientists who are working on the state-of-the-art ideas. So that is very need of the time, that our students are somewhere where if you want to increase the intellectual level of your student, your people, you need to put them in a pool of intellectuals. So since we are in south of Pakistan, we are south of Punjab, so our student usually participates in other activities, but due to some other reasons, some funding, some many issues, they not participate most frequently. So the main idea basically is that we need to provide the platform to our students to get the knowledge, to interact with the well-renowned scientists, to get the ideas where most advanced countries are working in our field, in other field as well, because if in future, if we do not have other seminar series, but we will also include in this series in general other scientists, other fields as well, to increase the audience, mean to whole our institute. All people should be interested, they should come and they should learn here. So for our first, so we started with our honorable director, Dean Faculty, Professor Dr. Said Ahmed Gulzar. Sir, that was very nice to hear about medical physics and deep of this field. Thank you very much, sir. Now I want to invite Dr. Faisal Iqbal for concluding remarks. Thank you, Shesa, and your company. So it's very great honor for me that I am here to attend this one-day seminar on high energy physics. So ये opportunity है students के लिए, and we are actually shifted from department to institute. So we have started a seminar series in our department. Now this is another trend. We also, Madam Alia started webinar, and we now have a seminar, one-day seminar. Initially, we started with the seminar, then we organized a workshop, Dr. Shweb, and we also have a conference in this year. The last year, this year, yes, we also have a next conference in February. So inshallah, we are doing well for the betterment of the institute. तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम डायरेक्टर साहब की गाइडेंस में जो है वो नए से नए जो है वो इवेंट आपके लिए कर रहे हैं. तो ये उसी का एक सिलसिला है जो स्टार्ट हो चुका है. तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में, जैसे हमने भी कुछ दिन पहले MOU भी साइन किया था NCP से, तो वहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे इंटरेस्टेड है NCP जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज हैं, लीनियर एक्सीलरेटर की, अगर आप पार्टिकल फिजिक्स में काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी शुएब साहब की एलेबोरेशन है ऑफिशियली. तो मैं शुएब साहब और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, और प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अहमद गुलजार साहब को, डी फैकल्टी ऑफ फिजिकल एंड मैथमेटिकल साइंस, कि उन्होंने ये तमाम हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन कर दी है कि अब कोई भी बच्चा जो है डिपार्टमेंट से भी उनको आइडिया लेके आता है. तो अभी एक स्टूडेंट्स ने हमें लास्ट टाइम एक आइडिया दिया था कि वो टॉप कराना चाहता था, तो हमने उस आइडिया को लिया और इम्प्लीमेंट करके दिखाया है, और वो जो टॉप है वो नेशनली इंटरनेशनली बड़ी हमसे हाई एप्रिसिएशन हमें मिली है इनिशियली, क्योंकि इससे पहले इस तरह का आइडिया जो है वो नहीं था. तो सर की गाइडेंस में इंशाल्लाह हम एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और होपफुली आप देखेंगे कि अगर हमें जो रिक्वायर्ड फंडिंग जो हमने
HEC से डिमांड की अगर वो मिल जाती है तो आने वाले दिनों में ये इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स जो है वो पाकिस्तान का बेस्ट इंस्टीट्यूट और दुनिया के हाई रैंक इंस्टीट्यूट में शामिल होगा। थैंक यू। Thank you so much, sir. Now, I would like to invite Dr. Shoaib and Dr. Faisal Iqbal to present share to our director, Dr. Said Ahmed Hussain. Concluding remarks from your side. Yeah. Conclude. So let me conclude as well. Mashallah, again, I will appreciate that. These are the part of the dreams. And I always used to say कि हम नगमा सरा कुछ गजलों के, हम सूरतगर कुछ ख्वाबों के, तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब हम देखते रहते हैं। और ये इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स बनाना और उसको पाकिस्तान का बेहतरीन इंस्टीट्यूट बनाना, और हमारे बाद हम तो नहीं होंगे, कोई वक्त ऐसा आएगा कि इंटरनेशनली भी यहाँ पे लोग इंशाल्लाह पढ़ने आएंगे। ये ख्वाब हैं और इन ख्वाबों की तकमील का जो रास्ता है वो हमने सही चुना है, उस रास्ते पे हम गामजन है। हमारी टीम माशाल्लाह 46 फैकल्टी मेंबर्स और ऑल डायनामिक फैकल्टी मेंबर्स, हमने पाकिस्तान भर से डॉक्टर अरशद जावेद टेक्सला से हमने उनको उठाया, अब आसिफ एंड असद, रऊफ अख्तर साहब और इकरा मकबूल सिटिंग ओवर देयर। तो हमने डिफरेंट जगहों से एक मेरिट पे लोगों को ला के, डॉक्टर शाहिद रिसेंटली पीएचडी, डॉक्टर हसन साहब एंड Siftan is a PhD scholar, Usman को आप सब जानते हैं माशाल्लाह, and all the people, Dr. Faisal. So this team will इंशाल्लाह वो जो ख्वाब है हमारे उनको पूरा करने के लिए हम पूरी जान लड़ाएंगे। और आज का ज़ाहिर है, आज के मैन ऑफ द मैच डॉक्टर शोएब साहब हैं और उनकी टीम है। मुझे यकीन है कि डॉक्टर शोएब साहब बाकी फैकल्टी को टफ टाइम देते रहेंगे, उनके लिए ऐसे चैलेंजेस मजीद बनाएंगे ताकि वो भी उनके पीछे रहे, और फिर हम मिलके उस यानी ये कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप, और फिर जो हमारा काबुल का जो महल है, जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स की बिल्डिंग है, इंशाल्लाह हम उसको भी बनता देखेंगे। और वहाँ पे हम अभी जब जैसे हम और जगह पे आए हुए हैं, हमारे अपने क्लासरूम इससे ज्यादा कंफर्टेबल इंशाल्लाह वहाँ पे होंगे। थैंक यू। Kindly, sir, kindly receive your share from. I would like to invite Dr. Rauf to kindly receive your share. Future doctor, inshallah, sir. Ma'am, Ikram Akul, kindly. Now I would like to invite Muhammad Shahzad Ramzan. He is president of our society. And Certificates. Mr. Ghulam Murtaza. Abdullah bin Saklan, kindly come and receive it. Please. जी सर। अमार मुरीद। ये वापस देते जाओ।
Umme Mariam. Ansa Maqsood. Altaz Sher Mohammed. Shazad. Kashafur Rahman. Kashafur Rahman. Arsalan Qasim. Arsalan Asghar. Muhammad Tahir Majid. Myself Hamna Khalil. इसके बाद सबा सलीम, इनके बाद सबा सलीम। Next है ना Nurulan. Muhammad Safwan. Nimra Batul. Muhammad Safwan. Hadia Javed. Hadia Javed. Ghulam Murtaza. Sharjeel Jilani. Muhammad Safwan. Sharjeel Jilani. Rashid Mahmood. Muhammad Shehzad. जी सर। Yes, we are done. We will deliver other student participants myself. Or now we will be moving toward the group photo in front of auditorium, and then we have lunch there. Main auditorium, multi-purpose hall. So my team was very young. Students are very young. They made many, I think, mistakes in calling different respected faculties and others. So forgive them. Thank you very much. We were moving towards in front of auditorium. Thank you so much for joining us.